Good evening, friends. I welcome all of you to this event. I am Dr. Varsha Varwandkar, President, Wiki State Mental Health Council. I welcome you all. And before starting this webinar, I would like to tell you something about our organization, Wiki. Wiki, Women Indian Chamber of Commerce and Industry. And here we are representing their State Mental Health Council of Chhattisgarh. And at Wiki, we aim on creating a healthy space for women of our state. We intend to share our understanding of the importance of mental health to the youth and parents of our state. Our objective is to bring betterment to the mental health status, and we want to increase happiness quotient of our state. So in that webinar series, today we are here to present you our wonderful young speaker, Kurian. And here she is going to talk about healthy mental health during pandemic, how you can take care of your mental health. So before starting, I would like to give a short introduction of my young buddy, Kurian. Kurian, a counseling psychologist, is a PGT psychologist at Delhi Public School, Raipur, and a subject committee member of Chhattisgarh Board of Secondary Education, an educational counselor, a speaker, a co-writer of 2 books. Wonderful. I was not knowing about that. And she secured gold medal for first position in Master of Arts in Psychology, and her objective as a counselor to reach out to those in need of counseling and to make counseling accessible to all. एन की इच्छा है कि वो काउंसलिंग को लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही सुलभ बना सके, उसके लिए वो हमारा, और इसके अलावा शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विकी छत्तीसगढ़ नेशनल मेंटल हेल्थ काउंसिल ऑल्सो। और एन की इच्छा है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट वो अपनी काउंसलिंग स्किल के द्वारा छत्तीसगढ़ में, स्पेशली छत्तीसगढ़ में, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करें, और उसके लिए वो बहुत ही आसान तरीके से लोगों से जुड़ती हैं, वेबिनार पे बात करती हैं। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी हमने अपने जो छत्तीसगढ़ के स्टेट के साइकोलॉजी के बच्चों को भी अपनी काउंसिल में जोड़ने का काम शुरू किया है। तो मुझे बहुत सारे नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कीर्ति, पूजा, मेघना, एंड मधु इज ऑल्सो देयर। देन वी हैव विधि वाधवा, और हमारे जो साथ में जो हमारे काउंसिल मेंबर है, मैं उनका सबका स्वागत करती हूँ। श्वेता जी, आपका स्वागत है। मोनिका, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी कि अभी जो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ है, ड्यूरिंग पैंडेमिक पिछले 2 साल से हमने इस पे बहुत ज्यादा बात करी है, और हमको समझ में आ गया है कि फिजिकल हेल्थ के अलावा हमको मानसिक स्वास्थ्य पे भी अपने ऊपर काम करना है। तो over to you, N. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, everyone. मैम ने तो बड़ी सारी तारीफ कर दी, मुझे अच्छा लग रहा है अभी। But everyone, thank you so much for joining. I'm sure आप लोग का बहुत सारा important काम था, but still you are taking out time. I really, really appreciate. We all together appreciate this. आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो pandemic situation है, इसमें what are the ways we can prepare ourselves कि हम लोग mentally थोड़ा stable रहे. Of course, this is that time wherein we all have been feeling very anxious. We all have been going through a lot of things mentally, like maybe losing somebody very close, maybe losing a job, and many such things. Before we start with everything, I'd like to know from you all, and it will be lovely if you could unmute and say this. What are the challenges? क्या challenges आपने face किए during the pandemic? If you could tell. या आपको क्या क्या चीजें बहुत stress की during pandemic? Yes, मैम, मैं बोलना चाहूंगी। मेरा नाम अलका है। मैं भी एक छोटा सा मेडिटेशन ग्रुप चलाती हूँ। मेरे
घर में मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो इतना ध्यान करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड एक स्ट्रेस था कि क्या होगा, ठीक होंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारे स्ट्रेस। और निश्चित रूप से फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं फर्क कोरोना ने बिजनेस में डाला है। ट्रू, जी जी, बहुत बहुत सही पॉइंट बोला। आई थिंक हम में से कई लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आप चैट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, यू आर ओपन टू टेल, बट आई एम श्योर हम सब कोई ना कोई चीज से गुजरे हैं, एंड आई थिंक इफ वी शेयर इट हियर, मोर पीपल कैन रिलेट विद इट। अभी तिशा ने लिखा है, आई विल जस्ट ट्राई टू रीड इट आउट। राइट, तो तिशा हैज रिटन, lack of physical touch, not being able to meet your loved ones, very very important point. I feel हम लोग सब social animals हैं, we are all social creatures, और not being able to meet our friends, और मैं ऐसे कैलकुलेट करती हूँ कभी कि यार अगर मैं बाहर जाती तो और कितने सारे फ्रेंड्स बना पाती एंड ऑल ऑफ दैट। तो कभी कभी दैट ऑल्सो causes me anxiety that I have missed on making so many new relations. That's a very 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 good point, Tisha, thank you so much. And Meghna has mentioned career tensions, colleges close so little interaction with peers. That's very true. That's very true. I mean, while we are in school, I think we are all just so excited with the fact that we can go to college and do a lot of masti and, you know, have crazy, crazy memories. But then we get to this pandemic situation and we are not able to meet so many people. We are not able to, you know, like again, socialize, be a part of different clubs, or have these opportunities which in a normal situation we could get. Very true. Shrinu has mentioned the lack of activity and incurring insomnia. Yes, insomnia was one of the major problems that even younger adults, like even children in their late or the teenagers have been through. So that's a very, very important point. Thank you for sharing that, Shrinu. And guilt trip of not being productive. Tell me about that. Yes, that is so relatable. I think everybody here can nod to that point. Guilt trip of not being productive. हमको लगता है कि यार हम लोग मतलब लिटरली शुरू के कितने टाइम मैंने तो सो के गुजार दिए, मुझे ज्यादा गिल्ट नहीं है सैडली, बट आई रिमेम्बर फीलिंग अगर I had the opportunity to go out, especially when we are all by ourselves and we have all the time but no opportunity to go out. इतने सारे आइडियाज आते ना, अगर आज हम बाहर जा पाते फिर तो ये पक्का करते, इतने लोगों से पक्का मिलते, यहाँ पे पक्का सोशलाइज करते, which we are not able to do. Ajit sir has beautifully mentioned a point that most of us have made some plans for our career in business, but due to pandemic, every plan went off track. That is so true. That is so true. While we make plans with the hope of, you know, that being maybe, you know, we could reach it sometime, but a very rare event and such a drastic traumatic event like pandemic or the COVID-19 makes us question everything, makes us question our hopes and, you know, should we really make plans, because like whatever is going on right now does not really support the idea of making plans as much. But yeah, everyone, thank you so much for participating so well in the question round. Yay, great clap for you. Okay. I'd like to move to the part, the thing that we have all come here for. And also I'd appreciate if everybody, if you can come on the video, we would love to see your wonderful faces. We would love to see your expressions while we are maybe talking about things. तो मुझे समझ में आएगा कि मैं बुद्धू वाली बातें कर रही हूँ कि अच्छी वाली बातें कर रही हूँ. Right. Okay. Talking about ways to prepare yourself, before we get to the points that I have to tell, again, I would love it if you can, even when I'm speaking, you can totally write your ideas on the chat box as to आपने क्या किया. I'm sure जो आपने किया होगा, कुछ innovative आपने भी सोचा होगा, that will be of great help to people. But a few points that I felt that I could be talking about. So here we go by the next one. The first one, that is, it is important to acknowledge कि हमको अभी anxiety है. It is important to accept the fact
कि अभी एंजाइटी है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल हैव अ वेरी रॉन्ग आइडिया अबाउट व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग इज. पीपल थिंक कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब you just have to think positive and you just have to be happy go lucky and like अगर मुझे दुख है तो मैंने दुख पे पर्दा डाल दिया and I'm saying oh no मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, I'm totally fine. But that's not how positive thinking works. Positive thinking तो ये होगा ना कि अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, I am acknowledging the fact कि हाँ भाई मुझे अभी इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है, I feel anxious. This is a very very rare event. Nobody saw this coming. I mean, of course, if somebody can see future, they did, but we did not. Most of us did not, right? We did not see this coming. And like I've mentioned before, we are all social animals. We are all social animals. We love interacting with people. And that's how we are meant to be. That's how we are wired. But then this event, again, goes to this point wherein like we cannot socialize as much. So it is important for us to acknowledge कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड देन इट इज completely normal to feel this way. Now I feel it is important also to decide on how much time we want to give. कितना समय हमको अपने एंजाइटी को देना है. एंग्शियस है, हमने एक्नॉलेज किया, बहुत बढ़िया. अभी हमको भी फुल दिन ये नहीं सोचना है कि ओ हम बहुत एंग्शियस है या हमारे लाइफ में सब दुखी चल रहा है. इसको फुल टाइम नहीं देना है. हमने एक टाइम स्लॉट रखेंगे कि 15 मिनट 30 मिनट, चलो आपका नहीं मेरा नहीं, 1 घंटा रख लो, 1 घंटा रख लो, बट उसके बाद नहीं. अभी हाउ कैन वी गो अबाउट दिस. हो सकता है कि हम जर्नल में लिखे, कहीं पे लिख दिया हमने, या हो सकता है कि हमने एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर दिया, या हो सकता है कि हमने एक इंस्टाग्राम रील बना दिया as to how we feel about it. Maybe that can help people. या हो सकता है कि हमने अपने फ्रेंड से बात कर ली कि this is what I'm going through. I feel a little suffocated. Yeah, I feel a little tensed about this. कि maybe somebody around me, the very fact कि मेरे घर के आसपास में किसी को कोविड हो गया, that is causing me stress now. Of course, even when you're trying to connect with your friends, हमको ये भी दिमाग में रखना है कि सामने वाला बहुत ज्यादा टेंस तो नहीं है. So being very good listeners to them is important, but this one thing will help you a lot if you connect with your friends and let them know, because they are also going through the same thing. So there is a possibility that they might understand you a lot. And maybe you can, like I mentioned, just write these things, and keeping a time slot is very important here. 15, 20 minutes, 30 minutes, and then finish, khata. Okay, then we will not think about it. Okay. And also, I feel there is this thing कि you need to divide your problems into ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और ऐसी क्या क्या चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. देखो भाई, अगर जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है एंड देन उसके ऊपर भी if I invest my time, I am not going to get anything out of it. I'm not going to get anything quality out of it. But if it is some things that I can control my anxiety. Yes, I can do that. Can I control the whole world ka pandemic situation? Can I control the whole world ka anxiety? Can I control, the coming of vaccines or not? I cannot do that. So let me not invest my time into thinking. कई बार अपन क्या करते हैं कि हम लोग ने टीवी देख लिया. I remember my dad doing this a lot. And then I'm not trying to blame him. क्योंकि किसी इनको बताना नहीं, मैंने बताया, but I remember he coming and telling me कि अरे आज का तुमको स्कोर पता चला. And score is not a cricket score. Score is the fact that आज इतना cases हो गया. And शुरू में we used to be very anxious. Then he used the word score to make it less, थोड़ा chill करने के लिए. But then that would cause us so much anxiety. आज 2,000, वहाँ पे 10,000. And then like सुन के ना, like you would mentally feel so stressed. You will almost be prepared कि अभी मुझे कभी भी हो जाएगा. You kind of get in that accepting stage also, which can be positive or whatever. But the thing is information से भी, या the kind of content that you're consuming, उसमें मुझे decide करना है कि इस चीज के बारे में can I do something. See, I feel bad for the people who are going through these things, but can I control everything? No. Can I control the people who are immediately around me? Maybe I can call up my friend. Maybe I can ask her. Maybe she can call up her friend. So I'm not a
Okay, I'm afraid to say this, but I'm not a Sallubai fan. But there was this movie wherein he said कि आप एक इंसान के लिए अच्छा काम करोगे, किसी को थैंक यू बोलो तो वो 4 लोग को बोलेंगे, फिर 50, 60, 70. So my thing is like just call up your friend. Start by just reaching out your best friend, and then they would reach out to somebody else. And likewise, maybe there could be a change that create, but that's the most that you can do about it. Is there any points anybody would like to add maybe in this thing? Okay, Kirti has mentioned ego barriers people accept the fact that are anxious, yeah. Especially in our country. I think let's blame all the countries for this. Like everybody has this problem. Varsha, you were saying something? Yeah, and I would like, I'm just requesting you कि आप हम अपने इमोशंस और फीलिंग को कैसे जर्नल में कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर जर्नलाइजिंग योर फीलिंग इट्स वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. सो क्या आप मुझे कुछ तरीका बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए कि जो साइकोलॉजी से फील्ड से नहीं हो, कि हमको किस तरह से जर्नलिंग करना है अपने थॉट्स की अगर हमको एंजाइटी हो रही है तो? Right. Journalizing ka there are again, because of technology, there are literally so many ways. I heard a few students of mine telling me this thing that there is this app. I don't exactly know the name of it. I'll post it in a group maybe. So the thing is, there is this app wherein you can write for yourself letters that have a time bound. So say suppose I've written a letter for maybe 1st July. कि ये 5th July को मुझे एक लेटर आएगा. This is a letter that I'm writing to the future self. Maybe that can help us evoke the part that we can be a little more hopeful about the future than maybe writing to your I've heard of somebody telling me, actually one of the clients telling me, a very wonderful thing that they do is that they write a letter to their younger self. अपने छोटे form को रखते हैं, and then they say, the world right now, it is so and so. But you have gone through so many situations and I'm not going to let you, be anxious anymore or whatever. Or journaling ka ye bhi ho sakta hai, like I was mentioning about technology. Maybe you could, make for yourselves videos. Maybe you can make for yourself these little videos just for yourself. You need not post it anywhere. Okay, that could be one way you could journalize. Maybe, and there is this thing with journalizing. I, for a long time, faced this thing. Now, I don't know if I'm speaking it for everybody, but I think for a large population, because I got a lot of relatability in this, it is that जो हम सोचते हैं ना कि 1st January को मैंने तो ऐसे 50 डायरी खराब की है. 50 डायरी नहीं हो सकता, मैं 50 साल की नहीं हूँ, बट देन मुझे लगता है कुछ नहीं तो 10 डायरी मैंने ये देख के खराब की है कि मुझे अभी 1st January न्यू डायरी एंड आई एम गोइंग टू राइट अ जर्नल एवरी डे, एंड दैट नेवर हैपेंस because it's about habit and it might take time to develop, and takes a lot of commitment, which might not happen every day. So when you talk about journaling, maybe you could keep for yourself one diary or one space, or maybe one app in your mobile, which maybe where you can write in things and write in every time you feel like writing. And it could be that you're writing something today, it could be something that you're writing an year after. But if say suppose I have an expectation from myself कि हर दिन लिखना चाहिए था ना, अब तो मैंने हर दिन नहीं लिखा, why do I continue now? So not having this much pressure on yourself, I think might help. Yeah. There's this one more thing about keeping social connections. A lot of you people mentioned that, we all face social anxieties. So I guess using social media, in a very positive way, of course, and letting yourself not be addicted is one of the most important things that we need to go for. Whenever you see some maybe content, or maybe you see your friend posting any DIY or anything, maybe you could write for them a supportive comment that, you're doing a good job. Okay. Or maybe when you're framing messages, you can frame messages of what inspired you to go on this day. Or maybe you could post about something that you went through and how did you fight that, which I see many kids doing it and becoming amazing influencers by that. And another most important thing is
socializing में, that this all starts with family. And the fact that we are not able to meet so many people, such a large chunk of our family, maybe we could be doing a regular video chat with these people. Maybe we could talk to maybe dada dadi nana nani ko बीच में call कर लिया, because understanding the fact कि हमारे पास जितना socialize करने का तरीका है उनके पास तो comparatively और कम है, और उनके जमाने में उन्होंने और कितना ज्यादा socialize किया. I know, I mean, I've taken this example that, my Dadaji, whenever he comes here, he just makes sure that he gets one new friend every time. And that there's no age bar to it. There is no cultural bar to it. He would just walk around and legit walk around and make friends. That's something that I've seen in him. And now when I see that he's all alone, sitting at home and, just maybe in just front of the TV, watching a few serials that he would usually, but then not really getting a time to socialize. And that one call that we give, that brings me a lot of happiness. So maybe making sure that, we connect to our people socially like that. And there is this one new thing that I got to know about in the first strike of the COVID-19, me and my family, we had COVID-19, and we were, because like I told you before that, you would randomly hear of so many people of your age. Like I remember my dad coming and telling me, and let's not put everything on my dad, okay? So is it so many people coming and telling me that, oh, do you know that person? Yeah, he was of your age. Yes. Oh, he died. And then I'm like, what? Like people of my age. And then at that one point, I am having COVID. And I am experiencing breathing trouble. And we were hospitalized. And then like hearing such news at that time got me struck so bad. And I remember, every time I would hear something of this sort, my discomfort would increase a lot much more. And then I had this constant, so I would, I would read the Bible, or I would just maybe just do something. And there is this one amazing thing that I got to know about, that those were the improv comedy shows. I don't know how many people are aware of it, but improv comedy, improvisation is that you play a few games, with a random set of people on Zoom call. Okay. And it could be funny, it could not be funny, or whatever. I started watching all of that. And then I started attending these stand-up comedies. And I saw that every time I was around all of these positive things, like positive videos, it really helped me a lot to get over the anxiety that I was experiencing at that moment. So I'd like to mention, and I'm putting this in the chat box also. There is this online forum, and no, this is not a paid promotion. This is Fascio Social. And Fascio Social is a virtual gaming platform. तो हर रात को 10 बजे यहाँ पे रैंडम लोग ऑल ओवर इंडिया से रैंडम लोग आते हैं, एंड वी प्ले गेम्स लाइक दमशराज. अभी ये कम्युनिटी काफी बढ़ गया इन द सेंस वी हैव अराउंड लाइक 30-40 पीपल. They started it really small. There is this beautiful, amazing person from Mumbai. Her name is Rachna Gagre, and she came up with this platform. So I think maybe you could use of something of this sort. They have musical nights, they have instrument nights, they have these peppy games like Truth and Dare and Never Have I Ever. I think something that our young adults could make help of a lot. And then there is something called as a go-go gigs thing. This is on Instagram again. If you ever wish to join for improv comedy, I'm just giving you a few live examples of what can be done, a few places that you can right now reach out and you can help yourself with. There is this other thing that I'd like to mention. In your connection with social media, please make sure that we do not go for, a very long time of TV viewing, because वो उसमें बहुत सारा negative बताते हैं. अरे वो negative नहीं बता रहे, actually they have to keep us informed. So they are doing their job, but then there is a possibility that इतना सारा सुन के we might not really,
be able to take in such information, and we might go a lot much more negative. So if it is possible, keep a time limit in TV viewing. आप देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है. No problem. It is just that you should not be in contact from all of these different, news articles, or maybe news that talks a lot about these negative news, or maybe about the kind of scores, like I mentioned before. So be very selective with what are the kinds of contents that you want to use, or who are the people that who are the people who really inspire you. Like on my Instagram page, I have followed Robin Sharma. On my Instagram page, I've definitely followed Varsha ma'am and some amazing students of mine who have made amazing content all throughout the pandemic, and they keep influencing people. So all these spaces wherein you can get maybe some quotes, maybe some fun reels, maybe just any YouTube channel that is giving you some kind of energy, just go and follow those, okay? And try to keep your social media interaction that way. Another thing, within the family, so say suppose this is for those people who are, with the family during this pandemic situation, and this is suppose Sahara work from home ka situation hai, which is for many people again, you can actually take out time to connect with your family, because in normal circumstances, you did not get so much time with the family. Let's understand that fact, okay? You had a lot of things to do in your office place, and you had put in a lot of time there. You would come back home बहुत थक हार के, and there was a possibility कि बहुत minimal interaction होता था families. So now that we have the time, maybe play games together, okay? Instead of viewing all of these negative news or something, maybe play games together. Maybe play games like, I don't know, I remember we used to play Ludo a lot. I remember we used to play cards a lot. Maybe you could do something of that sort. Maybe you could watch movies together. Maybe you could cook together, okay? For parents, for people who are parents, I'd like to say maybe this is one time you can have great relation with your children, just listen out to them. There is a possibility that, we all understand the fact that kids being kids, they have a lot to socialize at this point, but then they're not able to make a lot of friends. Even when they are now going to school, kids are facing a lot of social anxiety. उनको नहीं पता कि कैसे बात करना है, उनको नहीं पता कि कोई conversation start कैसे करना है, बहुत सारा awkward silences होता है. So maybe this is that time where you can help them build their communication skills, being good listeners to them. Just being good listeners to them. What is happening in their school? What is the kind of anxiety that they're facing? Just not being judgmental at that point. And for children, I'd like to say that this, again, be good listener to your parents. Sit with them, ask them how are they keeping. Because I don't know, I don't want to make it controversial, because I've always heard people say that, parents भगवान होते हैं, and I don't know why, but I don't agree with that. I say कि भगवान नहीं होते because ये बहुत ज़्यादा responsibility डाल दिया उनके ऊपर. Parents, आपका parents होने के पहले, they are human beings, and they have got to make their own set of mistakes. अगर मैंने expectation रख लिया कि मेरी मम्मी है ना, वो भगवान है, तो अगर उन्होंने छोटी सी गलती कर दी ना, मैं उनको माफी नहीं कर पाऊंगी. मुझे लगा कि ये तो भगवान है, इन्होंने गलती कैसे कर दी, and there is a possibility कि मेरा faith ही हिल जाएगा वहां से. So keeping this open, keeping our hearts open for the fact that they're human beings, and they also want to socialize. They also want to communicate. They also want, I feel like when your parents were kids, they had so many people around them to talk to. Like everybody would ask them, but now after a lot of responsibility, धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि कोई उनसे नहीं पूछता, उनको सबसे पूछना पड़ता है. Maybe you could be those people who could actually sit with them and ask, आपका दिन कैसा था, या यही पूछ लो कि बचपन में क्या किया आपने. आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारी मस्तियां की, एंड आई एम श्योर उनको बताने के लिए बहुत सारी स्टोरीज होंगे. just be there for them, just have a conversation with them. And this is also a time where you can pursue hobbies that maybe you would not be able to do when you were outside. The indoor hobbies, maybe you could learn an instrument. My mom right now is learning a violin.
and I'm learning a ukulele. I've literally learned 4 chords and that is all I know, but I have great fun with it. Maybe you could go for music, maybe you could read a book, maybe you could build a new interest, maybe you can renovate your room. I feel renovating the space that you are in, that can also lessen the anxiety a lot much more better. Or maybe you can get a pet. For people who have had pets, I feel like I've had friends who have had pets and I think it has helped them great in an amazing way for their mental health. And of course, I'm not trying to say that, just don't go and tell your parents like, oh, by the way, Anne ma'am told ki you have to get pets, so like you better get pets. Don't do that with them. Okay, you're not trying to cause any sort of disruption there, but maybe get just something that you can maybe have a street pet. Okay, just anything you can commit your time into, make again reels and stuff again. And one of the most important things which my mom always reminds me, and I would like to pass this reminder, and I'm not following this as much, I'll be very honest, but then I think everybody should be doing this, is called as exercise. And by exercise, like there are a few ways that I actually very recently learned that it's not just about stretching all the time. It could be something as simple as doing a 30-minute sport activity. It could be, that you like Zumba, play a Zumba ka song and maybe play a video. There are so many amazing YouTube channels. Do that. Or maybe you like badminton, play that. Okay, play, of course, बहुत दूर मत चले जाना, घर के पास में खेल लेना. Maybe just do that. Or maybe there is just so many people. There is this culture of cycling that has improved a lot in Raipur. It's a new in thing. Everybody's cycling. My mom is also a cyclist. And maybe you could actually build something of that sort. Maybe you could start gardening. Maybe you could, I think, have a balanced diet. Don't go detox maybe, but just trying to have a balanced diet. And one of the most important things, make sure you have a good sleep. Okay, I am sure there are many people, many of us who have had a quite disruptive sleep pattern during these days. मतलब कई टाइम हम लोग फ्रेंड्स से बात करते रहते थे एंड मे बी कई बार हम रात को मूवीज देख रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट इन ऑल ऑफ दीज टाइम्स, कीपिंग अ गुड maybe sleep hour is, I think, according to me, a very important thing. Yes. Yeah, and I'm sorry for interrupting you. I would like to welcome our Guru Dr. J.C. Advani sir is here. So sir, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है. और एंड यू कैन कंटिन्यू. और जैसा कि तुम बता रही थी कि अभी जो पेंडेमिक में है, अभी हमारा ये जो दूसरा साल लगभग कंप्लीट होने को आ रहा है मार्च में, तो उसमें ये जो उसके साथ साथ एज ए साइकोलॉजी के स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डेवलप आवर स्किल्स. जैसे मैं अपना एग्जांपल्स बता रही हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, हमको एप्लीकेशंस उतना हमको प्रैक्टिस करने नहीं मिल पाता है. तो जैसे वी हैव स्टार्टेड आवर कैरियर काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, और आप बिलीव नहीं करोगे, ना सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से, इवन वर्ल्ड से हमारे पास बहुत सीनियर काउंसलर जुड़े हैं जो उस सर्टिफिकेशन को कर रहे हैं. और एट द एज ऑफ 50 और 55 दे आर वर्किंग ऑन देयर स्किल्स. तो आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, क्योंकि आज से 2-4 साल बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा. अभी ठीक है, अभी एक्सक्यूज है कि मैडम पेंडेमिक था इसलिए ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. उस समय आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट यू हैव डन, हाउ यू हैड यूटिलाइज्ड योर टाइम. सो वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, और आप प्रोफेशनल बनने वाले हो तो आप इंटर्नशिप्स लीजिए, आप अपना सर्टिफिकेशन करिए, अपनी स्किल को अपग्रेड करिए. जितना ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे उतना, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हो गया है 2020 के बाद में. अब हमको डिजिटली अपने आप को अपडेट करना जरूरी है. अब हमको ऑनलाइन काउंसलिंग हमको जूम पे लेना है, हमको सोशल मीडिया पे लेना है. तो उसके लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी. उसके लिए अपने किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से जुड़िए. जो हमने अभी एक फोरम बनाया है मेंटल हेल्थ काउंसिल का, उस पे आप लोग करिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. अमेरिकन साइकोलॉजी एपीए है, उसके मेंबर बनिए. अपने आप को आप डेवलप करते जाइए. और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स ओके टू टॉक. जैसा आपने बताया कि
आपके मन में कोई फीलिंग है, आप लोगों से बात करिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने मम्मी पापा को टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। मुझे आपके जैसे यंग बच्चे से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो यू कंटिन्यू। और ऑल वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स, एंड जैसे मैम ने बोला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज की, यू नो, दैट वी कीप डेवलपिंग आवर स्किल्स whatever profession you are in, but especially if you're a psychologist. Maybe I remember when I was completing, and then we were asking Ajwani sir कि सर हम काउंसलिंग कब कर सकते हैं तो सर बोल रहे थे कि सबसे पहले मुझे तो बोल रहे थे कि बी अ गुड लिसनर, कि मैं हमेशा बहुत ऐसे एक्साइटेड और मुझे बहुत सारा बोलना था. So he said practice being a good listener, and that has paved the way. I think that has helped me a lot. For everyone who is maybe a psychology student and trying to get into this and who wants to listen, there is this app called as 7 Cups, wherein they just train you to be good listeners. You don't have to be a therapist. You do not need to give anybody any suggestions. You do not need to give any advice. You just be good listeners. They just ask you to be listeners. वहाँ पे actually advice देना allowed ही नहीं है. And I think it will help us to, you know, develop the listening skills. You was wanting to say something, Varsha? यस, अजवानी सर, आप हम लोग को सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन रहा हूँ. हाँ सर, आपका क्या व्यू है इस बारे में? हाँ, सुन रहा हूँ. सुन. Be a good listener and is telling as a to become किस a बारे में भाई? You know, there was, or is, I don't know, there was a wall between the West German and East German. Okay. And there was a tradition or faith that whoever is a victim or sufferer, go in front of the wall and cry and speak out whatever the problem you have. And it is being believed that after speaking out to the wall, the worries and the anxieties, this goes off. So this was a wonderful time, simply like just confession room. Okay, we confess whatever we feel that we are guilty, that we free from being under the confession. So one psychologist has adopted this practice, and he only used to listen 1 hour, 2 hours without any except nodding yes, no, at all. And patient was relieved. He had a line and line of the patients who wanted to say. More important is that being a psychologist, we shall be able to encourage the client to speak. That is prime most important, because whoever are calling, I have one client, though I don't say that he's a client because so far he's not come. He took 3 times appointment, and at last when he used to say, "Sir, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ बोलने की मैं." Well, it's all right. When you feel that, you come to me. I'm not in a hurry. But when you will come, sure, I will listen to you, and it will be confidential. So that is the thing. Our purpose is to encourage him to speak out. And our duty is to listen it. And that art of listening will help you to analyze whole the thing as a whole. Matlab, it will not be piecemeal judgment. It will be a whole judgment. We have to be gestalted on that point. Okay, go ahead. Thank you. सर, आपने जो जर्मन की जो दिवॉल के बारे में बताया, ये बहुत ही अच्छी बात बताई। और इवन हमारे एक परिचित है, वो पंजाबी है, तो वो हमेशा भैया हम लोगों को बोलते हैं, उन्होंने एक कहावत बताई थी कि जब आप सुखी हो तो भले ही आप घर में अकेले एंजॉय करिए, लेकिन जब आपको दुख हो तो आप जोर जोर से छत पे जाके चिल्लाइए, आप रोइए। तो आपके प्रॉब्लम्स को, आपके चैलेंजेस को सुन के जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके फैमिली वाले हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और उनको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और बिलीव मी, जब हम अपन जब मेंटल हेल्थ का हेल्पलाइन पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि हमारे पास जो फोन आते हैं वो सिर्फ सुनाने के लिए आते हैं। लोग चाहते हैं कि वो हम उनको सिर्फ उनके बारे में सुन ले और उसके बाद वो रिलीफ फील करते हैं। कई बार 40-40 मिनट हो जाता है, मेरा क्लाइंट आया, वो
सिर्फ अपना वेंट आउट करते जाते हैं, रुकते जाते हैं। मैं उनको पेपर नेपकिन देती जाती हूँ, बीच में चाय पानी पूछती रहती हूँ। थोड़ी देर बाद बोलते हैं मैडम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, है ना? true, तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर साइकोलॉजी में। और आप सभी को अगर अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखना है तो हमको बोलना भी सीखना पड़ेगा, और बोलने से ज्यादा हमको सुनना सीखना पड़ेगा। very true. I just want to add one thing, Varsha जापान madam. में आपने तो जो सॉरी टू इंटरप्ट, जापान में तो क्राइंग थेरेपी। yes sir, Yes, sir. हेलो, yes sir, please tell. जापान में एक और साइकोलॉजी में भी एक्सेप्ट हो गई है क्राइंग थेरेपी। पहले एक रोने को एक कमजोरी समझा जाता था, अब रोने को एक मजबूती समझा जाता है। Only the brave man can cry, not a weak person can cry. And once who can cry, he can vent out his all things. Maybe he is crying alone on the strong shoulder, or even in front of a small child, or in front of some photo of God or old parents and anybody. He is being held by himself. हाँ बोलो तो अजवानी सर वो जो कहते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोता नहीं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? हेलो। बिल्कुल गलत। मर्द वही है जो दर्द को महसूस करता है, और जो मर्द वही है जो दर्द को महसूस करता है और वक्त करने पर रोता भी है और दूसरे के आंसू को रोकने में भी सक्षम होता है। वही मर्द है। राइट सर। क्या बात है। फैंटास्टिक। I just wanted to add one thing. मेरे ख्याल से बीच में बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, एंड सॉरी फॉर दिस, बट no, not a problem. वो वर्षा मैडम ने जो कहा ना कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम गो टू द टॉप ऑफ योर हाउस एंड शाउट फ्रॉम देयर, तो उसमें जस्ट एक सेंटेंस में ऐड करना चाहता था कि अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ओनली टिल सच टाइम दैट यू हैव नॉट हिट द सॉल्यूशन बटन। ओके, सो जब आप छत के ऊपर जाके शेयर करते हो, लोगों को बताते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, बट देन देयर कुड बी 100 पीपल इन द सोसाइटी हु नो अ इजी पाथ towards the solution for that particular situation. So isliye whenever you have a problem, always good to discuss with people and see if they can suggest or get you some solution. Yeah, please continue. Yeah, actually sir, we are trying to save space. हम लोग इन विकी जो हमारा स्टेट मेंटल हेल्थ काउंसिल है, उसमें सिर्फ हमारा उद्देश्य प्रेजेंटेशन देना या पीपीटी के थ्रू हमको बात नहीं करना है। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्पेस बने जहाँ पे लोग आए, अपने मन की बातें बताएं। और मैं जो हमारे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए और आप बताइए कि आपने क्या फील किया है या फिर आपके क्या अनुभव रहे हैं। क्योंकि हम जब लर्निंग एक दूसरे को शेयर करेंगे तभी हमारी लर्निंग बढ़ती है उसमें, और हमारा उसमें मेंटल हेल्थ भी उससे इम्प्रूव होती है। करेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के बाद सभी बच्चों को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को मैं जो नंबर दी हूँ 9826132982 पे अपना नाम और डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अपना, और जो भी लोग उसमें भेजेंगे तो उनको विथ ईमेल आईडी, तो वी विल प्रोवाइड यू ई सर्टिफिकेशन विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पार्टिसिपेशन। मुझे भी मिलेगा क्या? सर, आप तो हमारे लिए लर्निंग एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपका लर्निंग क्वोशिएंट इतना ज्यादा है कि आज हम हमारे प्रोग्राम्स में आप आ रहे हैं और हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। तो आप हमेशा बोलते हो कि आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को मिलेगा। Yes, I'm still yes. That's why I'm demanding. और सर, हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्रोग्राम में हम आपको ही सर्टिफिकेट दे पाएंगे। Thank you. Okay, and please continue. Yeah, just like one more thing, just reaching out to a therapist. I mean, during the pandemic, there are people who have gone through a lot of things. So reaching out to a therapist, I'm very, very sure that it takes a lot of
guts. It takes a lot of questioning yourselves and all of those procedures to actually go to a therapist. And I can understand, I would say that I can understand, is because I myself reached out to a therapist. I myself, took help. And it, like, even when I was a psychology student, it was just so weird for me to even think, यार अभी कोई मुझे हेल्प करेगा. लोग तो ये बोलेंगे कि भाई ये तो साइकोलॉजिस्ट है, इसको किसकी जरूरत, अगर इसने मदद मांग ली तो मतलब इसके पास तो जाना फालतू है. देन आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग, ये हार्ट का ऑपरेशन का डॉक्टर खुद के ऊपर तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट अभी नहीं, अभी टेक्नोलॉजी का नहीं पता. सो इट इज ओके टू रीच आउट एंड टॉक. एंड the best thing, say suppose if you're not able to do that, and if you have your friends around you, talk to them. And if you have your friends who are not able to maybe reach out to a therapist, or maybe just need a listener, be good listeners to them, being good listeners to them, like everybody here mentioned. मुझे से ना बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी मैं अडवाणी सर के सामने बोल रही हूँ ये सब, जिन तो मैंने सीखा है. So, but you're doing well. Go ahead. Thank you, sir. So there is this thing about listening that I've always felt like you go around to people, and अगर आपने बहुत सिंपल सी बात कह दी थी, आपने ये बोल दिया कि यार मुझे पिंपल हो गया है, पिंपल के भी लोग हल्दी और पता नहीं क्या क्या तो हमको सब बताने लगते कि ये लगा लो वो लगा लो ठीक हो जाएगा. बट कोई लिसनर बहुत रेयर अपन को मिलता है. सो बीइंग गुड लिसनर्स जस्ट मीन्स दैट आप अपना सारा काम छोड़ के बस उस इंसान की बात सुन रहे हो. When you are being listeners, it's like they're putting everything in front of you कि ये problem है, ये problem है, ये problem है, ये problem है. And then after a while they start identifying themselves. वो उनके लाइफ की प्रॉब्लम है और वो उनको पता है क्या करना है. हाफ ऑफ द टाइम हमको एक्चुअली पता है कि हमको क्या करना है. So if you are being a friend, their friend wala listener, so maybe do not tell them anything. Okay, just being good listeners. Yeah, if they ask you for an advice, give them an advice, maybe a relatable one at that time. But let's not, I mean, when somebody is telling us things, तो कई बार हमको ये भी लगता है कि यार वो इतनी सारी बातें मुझे मेरी फ्रेंड बता रही, मुझे नहीं पता वापस क्या बोलना. आपके पास जरूरी नहीं है हर बार सोल्यूशन हो. We as therapists, many of the times there are times when we do not know the exact thing that has to be done. Of course, there has to be a lot of thoughts that have to go behind it. So you don't need to come up with an abrupt solution कि अच्छा तुम ये वाली दवाई लगा लो ठीक हो जाएगा. That is not how it work. So you can take your time completely and just listen to them. Yeah, that's all I have to say. If there is anyone here, or like I'm sure there are many people who have many amazing ideas of what can be done to create a better mental health during the pandemic, I would love to I'd love for them to speak here. There are 3 people who have raised their hands. Is it because you want to say something? Unita ma'am, you are on mute. Now, am I audible? Yes, you're audible. Yes, ma'am. Yeah, good evening, everybody. Actually, I started a experiment with parents because I feel like that child at home, especially for these 2 years, first 3 months, parents and children were very comfortable at home. But after that, it was a very headache for a parent that a child is at home and they are also engaged with mobile. Yeah, that was the toughest part, being a academic head of one of the groups of the schools. And then I started calling up parents, how many time you spend for yourself, for your child, for your because this was an additional work for a parent to monitor a child, and it was seeming like that a parent was studying instead of a child. Yeah. So I started having what was your dream when you were a child? I started asking them their past, when what they were doing about. And after this, their parents started realizing, oh, my dream was so I have to not ask a child to dream for the neighbor's dream. Then the parent was asked that whatever your dream was, or you were not able to fulfill your dreams, try to see your dreams in your child and make them comfortable, because aggressiveness is much more in a child than a parent.
sitting at one place for like 1 hour and into the mobile. They are not engaged with their friends, they are missing their friends, they are missing their teachers, especially that environment. They are not able to move out. So this was very tough part. Like this I like started doing out, but like I would love that if you people all are like very experienced, and if you can give me some like inputs to it. Like, and my school is with the minority parents, and it's sort of an like corporate social responsibility work. Childrens are belonging with the like thela walas, laundry walas, and all these students are there, and especially Muslims are there. So I would love if like you can give me some inputs, like how like that perception should be changed for a parent. Ki if I am a labor, so my child should study till fifth, because we are taking only 300 rupees per annum from a child. That too, to make him a responsible parent, that he 300 also I have to pay. So it is the toughest part to take that 300 rupees. Yes, Sunita ma'am, definitely I would like to listen to you. And what I will expect from you, if you can share your contact number and details. Sure, ma'am. So, yeah, Sure, so ma'am. in person we will discuss, and as a team of psychologists, definitely we will try to help you, because it's a very noble cause as a corporate social responsibility you are doing. So we would like to contribute something for your organization also. You are based at Raipur? Initially I am based at Raipur, but like my working area is Rajnandgaon. Rajnandgaon, Gandai, interior, like Chowki, where like Naxalite students are also there. Yeah, definitely, ma'am. So you can share your contact number in chat box. Sure. So Sure, we will discuss. Nice. Right, ma'am. Yes. Just, Madam Sunita, one thing I want to say to you. Unita, sir. Ajwani, sir. Unita, sir. Unita. Unita, okay. Unita, madam. One thing that we have to be little careful when we are telling the parents that they can, if they could not see their dreams fulfilled, so they can see it through their children. No. Yeah. It's a wrong concept. It is a wrong concept. And here is a very dangerous minor hairline risk, like a sword, that it happens in so many cases, not in only those of the lower class. I don't think there is an issue, but in the major higher classes, this is the issue that is a parent who is, in spite of having everything, they could not reach to their dream goal, and they want to see their kids to fulfill that thing. Suppose father to be a musician, art is what the house, and we can judge individually. We shall not overburden our children with our dreams. Our dreams were our dreams. We could not fulfill. Still, we are happy. We have to learn to be happy with that. So happy parents can flourish the dreams of their own children. That is important. Once we impose our dreams, they hazard the situation. So please, we can remember this. I'll rectify this. I'll rectify it. Yes, sir. And next question क्या है? Yeah. Because Yes, it's sir. already Yeah. 7:55. Yeah. Okay. Kirti, is there something that you want to say? Because you've raised your hand. Good evening, ma'am. Good evening, Kirti. सभी टीचर्स जो भी यहाँ पे हम लोग मुझसे तो बहुत ही सीनियर हैं, सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम। मैम अभी तो अजवानी सर को सुनने के बाद मेरे पास तो अब कोई वर्ड ही नहीं है। नहीं कीर्ति, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कल भी आप हमारे जो कैरियर काउंसलिंग वाले वेबिनार में थे, आपने पार्टिसिपेशन किया था। जी मैम। जो मैंने बोला है ना कि हमने समय सभी को 24 आवर्स मिल रहा है, उस 24 आवर्स में हम किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना।
और आगे भी तुम लोग हम सब बोलते रहेंगे और सुनते रहेंगे एक दूसरे से, और जो हमारा विकी का जो मेंटल हेल्थ काउंसिल है उसके थ्रू हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोग हमारे पास आए, हमसे कांटेक्ट करें, अपने मन की बातें करें। और आज आपने जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को कैसे फिट रखा जाए, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज नॉर्मली हम सब हेल्थ के बारे में जब भी बात करते हैं हम उसको फिजिकल हेल्थ से ही मानते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को भी उसके उन्नयन करने के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नयन करने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो हम पिछले 1.5-2 साल में सीख गए थे। आपकी यंग जनरेशन के हिसाब से आपने उसको टेक्नोलॉजी से साथ कनेक्ट करके बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने बताया कि फेशियो सोशल जो एक ऐप है आप उसमें काम कर सकते हैं। जो मैं एक जर्नलिंग की बात बता रही थी कि एक 5 मिनट जर्नल्स फॉर बिगिनर्स, ये जो एक ऐप है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको 5 मिनट के अंदर आपको उसमें अपने जो भी इमोशंस है, थॉट्स है, आपको उसमें एक्सप्रेस करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया के कारण उनकी मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तो आप टेक अ ब्रेक, एक वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस टेक अ ब्रेक में आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं और आफ्टर 20 मिनट्स 25 मिनट्स वो आपको ब्रेक लेने के लिए वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो मतलब यह है कि आप 7 कप्स के द्वारा भी आप यू कैन बिकम अ वेरी गुड लिसनर। तो नई जनरेशन के साथ करने में मजा यही आता है कि हमको नई नई चीजें सीखने मिलती हैं। और आप सब आज के इस प्रोग्राम में जुड़े और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, हमारे पास एकेडमिशियंस है, सीनियर एकेडमिशियंस है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मेरे पास मैथ्स यूनिवर्सिटी के कलिंगा आपका एमएटी यूनिवर्सिटी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, राजनांदगांव कॉलेज से है, भिलाई से, सेंट थॉमस कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के साइकोलॉजी के बच्चे जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ अलका मैम भी जुड़ी हुई है जो मेडिटेशन में, एक मेडिटेशन भी बहुत अच्छा एक सोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी मेंटल हेल्थ अच्छे से रख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैडम हम कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन के ऊपर हम एक पूरा वर्कशॉप करें। और अगले प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी कि जो हमारा अगला प्रोग्राम है भिलाई से मोनिका साहू जो हमारी काउंसलर है और स्पेशल एजुकेटर है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेने वाली है। तो अगले महीने के लिए इस तरह हमेशा से आगे हमसे जुड़े रहिएगा। और जैसे कि मैंने अपना नंबर बार बार शेयर किया है, प्लीज सेंड मी व्हाट्सएप, आई विल इंक्लूड यू इन आवर मेंटल हेल्थ काउंसिल ग्रुप। और इस तरह से हम शेयरिंग और केयरिंग करके आगे बढ़ते जाएंगे। और आप सब अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखें, 20 मिनट्स एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, मुस्कुराते रहें, लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखें, जिसने आपके लिए जो किया, बोलते हैं ना, जो करे तो अच्छा, जो ना करे तो उसका भी भला। तो जिसने आपके साथ अच्छा किया उसका भी भला हो, और जो ना किया उसका और ज्यादा भला करने का सिर्फ ब्लेसिंग्स देते रहिए। आप सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन देते जाइए, और आपका जब आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो वो ऑरा आपके चेहरे पे नजर आएगा, आपका आभा मंडल आपका बढ़ जाएगा और ये अपने आप बताएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है। तो दोस्तों फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आप सब अपनी मेंटल हेल्थ को हिट्स एंड फिट रखिए। और हमसे I just want 1 minute. Yes, मैम। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। और काफी सीनियर लोग हैं, मैं बहुत यंग हूँ आप सबके बीच में, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी मेरे छोटा ग्रुप है, फ्री ऑफ मेडिटेशन सिखाते हैं। तो कोई भी अगर आसपास ग्रुप में कोई है जिसको जरूरत है ध्यान की, तो प्लीज जुड़िए हमारे ग्रुप के। मेडिटेशन के एक्सरसाइज से छूट जाती है, उनके जॉइंट्स के पेन में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अपने आप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हीलिंग एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप, आई एम जस्ट पोस्टिंग माय नंबर एंड यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू मैम, वर्षा मैम, फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक्स अ लॉट। Ma'am, there is this wonderful message that we have missed from the chat section, which okay, I'd like to, if I could read. It says, I'll just quickly read it. It says, so Sakshi has written this. To this point, I guess कि आजकल के डेट पे real relations या true people find करना is very rare. Not everyone is a good listener.
And then the important point that she have mentioned is accepting having anxiety in front of yourself is more important than accepting in front of people. And like Varsha ma'am mentioned, she has also written that scripting and journalizing helped her a lot. And then she has talked about mirror work. I think she's talking about mirror therapy, that talking in front of the mirror, talking to yourself, using self-affirmations. So yeah, that's that. So thank you for being such a wonderful audience. और आपका कल का रविवार बहुत अच्छा आप लोगों का गुजरे, और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि हम में से हर कोई एटलीस्ट आज 5 लोगों को फोन करे और आज की वर्कशॉप से कम 5 पॉइंट्स निकाल के, अगर हम उन 5 को फोन पे, वो हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और उनको हम मैसेज करेंगे, तो आप सोचिए कि हमने कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। और जब एक ग्रुप फोटो जरूर ले लीजिएगा। हाँ, चलिए, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपसे अपेक्षा है कि आप लोग अपना वीडियो चालू करें ताकि मैं सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे देख पाऊं। Yes. Everyone, come on, show your beautiful faces. क्या मस्त हंस रहे सब लोग, बहुत सही। पूजा, मेघना, तरुण सर, विधि, सपना, अरुणा, श्रीनु, साक्षी, प्रकाश, करुणा, दीपा, मोनिका मैम, वंदना, यश, रितिका, अमिता, यस, सबका नाम लीजिए, अब तो सबको आना पड़ेगा। एक सेकंड है। सेल्फी की जगह ग्रुप ही है ना, अपने सारे बच्चों के साथ में ग्रुप फोटो, इट्स कॉल्ड ग्रुप ही। चलिए, तो फिर अपने आप को डेवलप करते जाइए, नया सीखते जाइए, सिखाते जाइए, और थैंक्स और ग्रैटिट्यूड, सॉरी एंड थैंक्स बोलते जाइए। ऑटोमेटिक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर मुलाकात होगी अगले महीने मोनिका साहू के साथ में, जो मैडम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप करेंगी। और अपना नंबर देना मुझे मत भूलिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, आप सभी का दिन शुभ हो। और अजवानी सर को आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।